prokaryotic one. In case of prokaryotic one, the DNA polymerase could be of mainly two types. The first one is template dependent. That means वो DNA polymerase जो एक substratum, मैंने इसको substratum का नाम इसलिए दिया है because it is easy to relate. So जो एक इनिशियल पहले से जहां पर जो चीज प्रेजेंट होगी उसके ऊपर वर्क करेगा, तो उसे हम टेम्पलेट डिपेंडेंट बोलेंगे. आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट वर्ड्स बिकॉज फिर स्क्रीन भर जाएगी एंड आई नीड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो डिपेंडिंग अपॉन, और जो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है, नाउ दिस टेम्पलेट कुड ईदर बी द डीएनए or the template could either be the RNA. Now, if the template is DNA, so it would be given the name of DNA dependent DNA polymerase. Why? Because we are talking about DNA polymerase. First classification was template dependent, and this template is the DNA one. So the DNA polymerase which would be working here would be, और उसका basic structure क्या होगा, basic nature क्या होगा, it is DNA dependent DNA polymerase. इसका common example क्या है, it is the DNA polymerase enzyme which works in case of the prokaryotic DNA replication. The second one is RNA. So what would be the name for this? It would be RNA dependent DNA polymerase. Why? Because यहाँ पर RNA जो है वो template की तरह work करेगा on which this DNA polymerase would work. Example for this is RNA polymerase. Now next one is, we have the second classification as DNA independent, template independent. That means this particular DNA polymerase second category is जो template के ऊपर dependent ना हो. Example for this is deoxynucleotide transferase. That is let me just write it, oxynucleotide transferase. Okay, so this is the example. This is the enzyme on which, or if this is the enzyme जो template पे dependent नहीं होता. Now this was about it. Now the types of the DNA polymerase are, in case of the prokaryotes, it is DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3, 4 and 5. इसके अंदर important one is the DNA polymerase 2. All of them are important, but जो सबसे important role play करेगा, it is the DNA polymerase 3. Let's discuss about each one of them. So now the very first one is DNA polymerase 1. So I just 2 minutes back I called the third one as Kornberg. It was my mistake. The DNA polymerase 1 is known as Kornberg enzyme. Why? Because it is the first polymerase which was discovered by Kornberg. It is made of single nucleotide. It is made up of single nucleotide. Now the activity for the same, इसकी activity, it have two main activities. अब see, now every single polypeptide, every single polymerase would be having some specific properties or some specific functions to perform. Before that, just understand about these things. उससे ये और clear होगा. And that is, there are 4 main important processes that need to occur in case of DNA replication. First thing is, they are not like linked to each other, but you need to remember about them. First one is polymerization. That means there need to occur the polymerization of the nucleotides with each other in order to form the complete strand. So DNA polymerization would always occur from 5' to 3' direction. Direction is very, very important. Then one more important process that need to occur is, it is primer removal. That means if you all know, initially primase was working in order to create or in order to form or synthesize the primer. So after the complete process happens, there need to be removal of the primer. So the primer removal occurs again in
5' to 3' direction by the help of exonuclease. Another important point, because we know the primer is made up of the nucleotide sequence. So these primers are trimmed one by one. That means let's consider हमारा ये primer है, just a representation. So पहले first remove होगा, then second, then third, then fourth. So one by one ये trim out होंगे. Next we have the gap filling. Why gap filling? Because Okazaki fragments का formation होगा. क्यों होगा? Because we have just discussed जो synthesis है वो हमेशा 5' to 3' direction में होगी, and we have two strands, one in 5' to 3', other one in 3' to 5'. So जिस स्ट्रैंड के ऊपर गैप्स होंगे जहां पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का क्रिएशन होगा, वी रिक्वायर द गैप फिलिंग एज वेल. For this gap filling, we require 3' to 5' polymerase. And the third last one is the proofreading, because we know DNA replication is a very regulated process. It needs to have some proofreading as well. So for proofreading, it occurs in 3' to 5' direction by the help of exonuclease. So remember about this, and अब ये सब कुछ हमारे DNA polymerase के अंदर workout करेगा. Now see, the first one is DNA polymerase 1, and इस DNA polymerase 1 के पास दो मेन काम होते हैं. एक काम होता है एक्सोन्यूक्लियस का, दूसरा काम होता है पॉलीमरेज का. एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या था अभी हमने डिस्कस किया. इट इज फॉर द प्राइमर रिमूवल एंड सेकेंड वन वाज फॉर द प्रूफ रीडिंग. सो ये प्राइमर रिमूवल भी करेगा और ये प्रूफ रीडिंग भी करेगा. अगर प्राइमर रिमूवल होगा तो ये 5' to 3' डायरेक्शन में होगा, और प्रूफ रीडिंग होगी वो 3' to 5' डायरेक्शन में होगी. देन सेकेंड वर्क इज टू वर्क एज अ पॉलीमरेज. तो पॉलीमरेज की तरह वर्क करेगा इन 5' to 3' डायरेक्शन. Now, talking about the polymerization rate, what do we mean by polymerization rate? So, it is the rate at which the DNA polymerase 1 actually, what we can say, it adds on the polymers to the complete nucleotide chain it is forming or creating. So, the polymerization rate is that it adds on 20 nucleotides per second to the chain it is working upon. Now we have the processivity. The processivity is very, very low in case of DNA polymerase 1. Important point to remember is that when we, now the one more important point, now what is the what do we mean by processivity and what do we mean by polymerization? Processivity means the accuracy at which the DNA polymerase is working. What do we mean by accuracy? So let's consider we have this DNA, and on this DNA the replication process is occurring. Now what happens when the DNA polymerase 1 is working upon it? Because we know the DNA polymerase the replication occurs in complementary basis, क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड या फिर जो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, they are created between A, T and G and C. So the accuracy की अगर हमारे टेम्पलेट के ऊपर A है, so यहाँ पर T ही फॉर्म होना, यहाँ पर T ही बाइंड हो, या फिर यहाँ पर U है तो यहाँ पर C ही बाइंड होना चाहिए. इसे हम प्रोसेसिविटी बोलेंगे. So polymerase 1 की प्रोसेसिविटी is low. So it is not the most important enzyme जो इसके अंदर work करता है, because we require high processivity enzyme. Now, when it is treated with trypsin and subtilin, so these both are the enzymes. जब इनको हम, these are the chemicals, इनको जब हम polymerase 1 को जब हम treat करेंगे इससे, so polymerase 1 would convert into one small fragment and one large fragment. जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा उसकी जो एक्टिविटी होगी इट इज 5' to 3', और जो लार्ज एंजाइम, जो लार्ज फ्रैगमेंट होगा उसको हम क्लिनाओ फ्रैगमेंट का नाम देते हैं. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मेक श्योर यू रिमेंबर अबाउट दिस कि जब हम उसको ट्रिप्सिन और सब्टिलिन से ट्रीट करेंगे तो दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, स्मॉल एंड लार्ज. जो लार्ज वाला है उसको हम क्लिनाओ फ्रैगमेंट का नाम देंगे. नेक्स्ट वी हैव the action of the DNA polymerase.
एस्पार्टेट हेल्प्स इन द प्राइमर रिमूवल. दैट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज के जो एक्शन है इसके अंदर एस्पार्टेट जो है वो प्राइमर के रिमूवल में हेल्प करेगा. एंड वेयर इज दिस एस्पार्टेट प्रेजेंट? It is present in the active site. Now next we have the DNA polymerase 2. It is again a single polypeptide. The polymerization site is 5' to 3'. इसके पास proof reading activity होती है. Polymerization rate is 40 nucleotide. So you need to remember about the polymerization rate for the each individual polymerase, because question could be framed depending upon the what we can say, the speed of the polymerization. So make sure you remember about this. Polymerase 1 के अंदर it is 20 nucleotides per second, and polymerase 2 के अंदर it is 40 nucleotide. The processivity is comparatively higher. It is 500 nucleotide per second, and it assists the DNA polymerase 3. That means DNA polymerase 2 जो है वो 3 को help करता है working में. Now we have the DNA polymerase 3. It is the main enzyme जो अभी हमने स्टडी किया. Now it have multi subunits. 10 इसकी subunits होती हैं. We just discuss about its complete structure on the slide. The activity for इसके पास दोनों activity होती है, that is both polymerization and exonuclease. इसका जो rate of polymerization है, it is 100 nucleotides. So you can see it is 1000 nucleotides. So you can see it is very high. The processivity, again, you can see the accuracy it is showing, and it leads to the replication, or it helps in the replication on both the strands. Then we have DNA polymerase 4 and 5. ये gamma family polymerase से belong करते हैं. इनके पास ना प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती, ना प्राइमर रिमूवल. इनके पास सिर्फ 3' to 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, जो डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर प्रोन रेप्लिकेशन. द रीजन फॉर दिस, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? So the reason for this could be because इनकी processivity और polymerization rate बहुत low होता है, इसीलिए they are responsible for error prone replication. Example, इनका काम मेन कहाँ आता है? In the translucent DNA polymerase. Now let's discuss about the structure of the DNA polymerase 3. Okay, so talking about the structure of the DNA polymerase 3, it is the most important enzyme which helps in the replication. So it have mainly four structures. The first structure is the core component. Then we have the dimerization component. Then we have the processivity component. And the fourth one is the clamp loader component. Okay, so in case of these are the 4 subunits. मतलब इन चारों यूनिट से मिलके हमारा पूरा डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्म होता है. और इन सारे components के अंदर we have again some few more components. So in case of the core component, we have alpha, we have epsilon, and we have theta. तो जो एप्सिलॉन है इसका काम है 5' to 3' पॉलीमरेज कॉज करना. एप्सिलॉन का काम है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करना. और थीटा का रोल अभी तक नोन नहीं है. देन वी हैव द डाइमराइजेशन. सो इट इज द टाउ. इसका मेन काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द डाइमराइजेशन ऑफ द DNA polymerase 3. Next we have the processivity, that means जो accuracy check करेगा. So इसके अंदर we have the beta clamp loader. So इसका ये क्या होता है? It is a homodimer. Last we have the clamp loader component. So clamp loader component के अंदर we have the gamma complex. इस gamma complex के अंदर क्या होता है? We have 5 polynucleotides. ये 5 polynucleotides लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द बीटा क्लैंप के अंदर हेल्प करते हैं, बिकॉज
प्रोसेसिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 इज वेरी हाई. सो इसका एक सेपरेट कंपोनेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज में कि उसको लोड कौन करेगा. सो लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ इज डिपेंडेंट अपॉन द अल्फा कॉम्प्लेक्स जो 5 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, जो लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द बीटा क्लैंप में हेल्प करता है. एंड बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड अगेन एन एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस,